All right, so encryption basically क्या होती है? Encryption is the process of converting your text into code, or you can say converting it from intelligible format to an unintelligible format. So symmetric encryption देखते हैं. Symmetric का मतलब ये होता है कि it's same, right? So you're using the same key for encryption and you're using the same key for decryption as well. So there's only one key. सो प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपके पास जो भी उसको एक्स कह रहे हैं, ठीक है, आपका कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है. सो देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स. अभी हम यूज़ कर रहे हैं डेस, एंड देन दैट्स गोइंग टू, जब आपका वो की लग जाएगी, इंक्रिप्शन लग जाएगी एक प्लेन टेक्स्ट पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी साइफर टेक्स्ट में. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रिप्शन जो है when applied with some key and some x plain text, it becomes y ciphertext. And then you would need a decryption algorithm. So basically वही चीज़ कर रहा होगा जो यहाँ पे कर रहा है, बस in the reverse format, so that now if you take the ciphertext and that key, you will get your plain text back. सो रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योर एंक्रिप्शन जो होती हैं वो दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि सेंडर रिसीवर जो अपनी कीज़ सेंड कर रहा है, दैट शुड बी इन अ सिक्योर मैनर, बिकॉज अगर कीज़ एक्सपोज हो जाएंगी पब्लिक को तो फिर हर बंदा प्लेन टेक्स्ट को देख सकता है. द सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम शुड बी, इट शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग. इट शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आपके पास एक या दो अगर पेयर भी आ जाते हैं साइफर टेक्स्ट के और प्लेन टेक्स्ट के, तो वो दूसरे यूज़र के पास, तो फिर भी वो एल्गोरिदम को क्रैक नहीं कर सकता है. नाउ हाउ डू यू अटैक दिस सिमेट्रिक encryption? So there are two ways of attacking. The first one is brute force, which means you're trying every possible combination of the keys. Usually hackers क्या करते हैं, it takes them roughly about x by 2, where x is the number or the amount of keys they have to try. Usually it might take sometimes faster, it might take sometimes longer, depending on the different conditions. तो आसान जब होगा जब आपके पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उस प्लेन टेक्स्ट के बारे में, सो वो ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा. अगर प्लेन टेक्स्ट पहले से कंप्रेस हुआ है और फिर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा है तो वो फिर ज़्यादा देर से टूटेगा. देन वी हैव क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्ट एनालिसिस, सॉरी. क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है आपके पास कि आप एनालाइज करते हो इंफॉर्मेशन about the security system to understand कि encryption algorithm चल कैसे रहा है. You're talking about the nature of the algorithm, and you don't necessarily need the key itself over here. But once you understand how the algorithm is working, then from that you can deduce the key, and which can be very, very dangerous because now you have the access to the key. So cryptanalysis is more about analyzing the nature of the algorithm rather than focusing on getting the key. Now there are, so yeah, it's written over here to understand the hidden aspects of the system. It is used to breach the cryptographic security systems. Even if the key is unknown, it relies on the nature of the algorithm and same and some knowledge of the plain text or the pairs of cipher or plain text. So you need some knowledge of the plain text or the cipher plain text as well. Now you have the types of symmetric encryption. So there are two types of encryptions, symmetric encryptions. You have the block ciphers and you have the stream ciphers. So block ciphers क्या करते हैं, जो भी आपका plain text होता है उनको वो blocks में तोड़ देता है. So for example आपके पास अगर 56 बिट का डेटा है तो वो उसको तोड़ेगा आपके पास 28 बिट में. So दो हाफ्स में, दो ब्लॉक्स में कर देगा. So this is like what is known as a block cipher, right? So it's breaking it down into blocks. And जो उसका cipher text भी जो generate होगा वो भी उसी block size का ही होगा. So if there is like a 28 bit block का size का plain text, so there will be a 28 bit का cipher block of text generated against that. So the plain text in the field is a fixed block size which generates the cipher text of the equal block size. So फिर हमारे पास stream cipher आ जाता है. Stream cipher is very easy. Basically it processes the input elements continuously and it is outputting one element at a time. So समझो ये byte by byte हो रहा होता है,
एक बाइट आया, फिर दूसरा बाइट आया, फिर तीसरा बाइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो कंटिन्यूसली हो रहा है. सो इसकी अगर डायग्राम देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फर्स्ट आया, ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसको इंक्रिप्ट किया, की लगी और उसने फर्स्ट साइफर ब्लॉक निकाल के दे दिया. देन आपके पास यही डिक्रिप्शन के लिए कि वो जो फर्स्ट साइफर ब्लॉक है उस पर आपने डिक्रिप्शन की लगाई, एंड देन वो फिर एक और ब्लॉक सेम साइज़ का आपको प्लेन टेक्स्ट दे देगा. अगर हम स्ट्रीम साइफर को देखें तो स्ट्रीम साइफर के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, ये बाइट स्ट्रीम एम है, ठीक है. इस पर कोई जोर ऑपरेशन लग रहा है, आई थिंक सो. एंड देन यहाँ पे आपके पास एक की स्ट्रीम आ रही है बार बार, हर दफ़ा एक स्ट्रीम आ रही है, एंड देन वो फिर आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है. एंड देन इफ़ यू जस्ट फ्लिप दिस तो वो फिर डिक्रिप्शन का बन जाएगा, विच मीन्स कि इफ़ यू डू समथिंग लाइक दिस के यहाँ पर साइफर की स्ट्रीम आई थिंक यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट हो रही है. हाँ, साइफर की स्ट्रीम अगर सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक की आ जाएगी, उसमें वापसी प्लस आ जाएगा, और की जब लगेगी तो वो ऑपोजिट वे में होगी. यहाँ पर जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा हुआ है वो सूडो रैंडम बाइट जनरेटर लगा हुआ है. तो यू कैन यूज़ द सूडो रैंडम बाइट जनरेटर जिस पे की लगाओगे, एंड देन दैट्स गोइंग टू गिव यू व्हाट द प्लेन टेक्स्ट of the byte stream, what m over here. And you need to make sure that this pseudo random byte generator or this algorithm should be in the reverse order ताकि वो फिर उसको decrypt कर सके. So now हमारे पास आ जाता है block cipher algorithms. There are different types of block cipher algorithms. DES की हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर था, हम यहाँ पे बात कर रहे थे. So DES जो होता है वो होता है आपके पास I forgot its full form. I think so. It's called Data Encryption Standard, and then AES stands for Advanced Encryption Standard. Anyways, so DES जो होता है आपके पास, it has a 64-bit block size and 56-bit key. And जो triple DES होता है, since it triple means 3 times, so इसका block size same है, but इसका जो key size है वो change हो जाता है. Now it's like 112. Wait, is it what I think it is? 1 second. So 56. Yeah, I was right. So if you add this 56 bit again, so 56 plus 56, that makes 112, and then या तो 112 यूज़ होती है या 168 यूज़ होती है. So if you add 56 again, you will get 168. And then AES is a 128-bit block, so twice as much now. I think so. 64 times 2. Yeah, so twice as much as a DES bit block. And then इसके अंदर you start with 128 and then you start adding 64 again and again. So यहाँ पे 64 की increment हो रही है. So you can use a 128 bit key, 120, 192, 156, and so on and so forth. So what is the drawback of DES? Why are we not using DES? So the first thing which is very apparent is the key size, right? So this is like 56, that's 112, that's 128. So of course 56 is very short. So that's the reason why. But you would find that you're normally not using triple DES, but instead you're using AES. And the reason is because the way how triple DES works is that even though there are like you're like using the same operation 3 times, so there's like a 64-bit block, 64, 64, and then you're applying the key on each of those, so it becomes very slow. The more the more complexity that you're adding to your encryption algorithm, the more slow it becomes to decrypt with the key. So this is the reason why we're not using triple DES, because with the larger key size we are now slowing down our system. So why do we use AES? We will look at that. And will we be achieving the same drawback as to triple DES or not? We will see that as well. So let's look at the DES algorithm. So in the DES algorithm, this is going to be broken down into many different subparts. So we look at each of these subparts individually afterwards. So the overall diagram is that you have a 60-bit block of plain text entering,
there is an initial permutation, and there are always going to be 16 rounds, always going to be 16 rounds. And your round key generator is always going to give a 48-bit key. So initially we talked about that it does consist of 56-bit keys, but the thing that you're going to be confused is that how is a 56-bit key giving out a 48-bit key in each of the rounds. So we will discuss as to why this is happening, but just know that कि स्टार्टिंग में आपके पास 60 ब्लॉक 64 बिट का ब्लॉक आया, उस पर आपने कोई इनिशियल परमिटेशन अप्लाई की. वो परमिटेशन कैसे अप्लाई होती है, क्या होती है, उस पर हम डिस्कस करते हैं. देयर आर गोइंग टू बी 16 राउंड्स. देयर इज गोइंग टू बी अ राउंड की जनरेटर विच इज़ गोइंग टू गिव अ की इन ईच ऑफ द राउंड्स which is going to be of 48-bit, and then you have the final permutation. So permutation block को सबसे पहले देखते हैं. permutation block के अंदर हमारे पास ये 64-bit की एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है. सो यू कैन इमेजिन दिस इज़ लाइक एन आईसी और लाइक ए चिप इन विच ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हुई हुई हैं. ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस कैसे आए, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट लेट्स जस्ट अस्यूम कि यहाँ पर फर्स्ट वाली जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ कनेक्टेड विद द 64th bit over here, and the 64th bit is connected to the second one. So initial यहाँ पे लगा हुआ है, and जो final जो होगा इसका, that will be just the reverse of that. So if you take this thing, 2 जो होगा वो फिर आप कनेक्ट हो जाएगा 64 के साथ. So 2 हो जाएगा 64 के साथ and 64 हो जाएगा 1 के साथ. So इनिशियल परमिटेशन के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन हुई हुई हैं, फाइनल परमिटेशन के अंदर उसका बस जो क्या कहते हैं इनपुट टू आउटपुट वाली जो मैपिंग है वो फ्लिप हो जाएगी. इट विल बी फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट. इनको हम स्ट्रेट पी बॉक्सेस भी कहते हैं. Now let's look at what is going on inside each of these rounds. So हर राउंड के अंदर आपके पास 2 ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं. एक ऑपरेशन होता है आपके पास विच इज़ नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन, एंड एक फंक्शन होता है आपके पास जो होता है आपके पास let's take a look at the substitution and the other part inside this. So हर राउंड के अंदर आपके पास जो बिट होती है, जो भी जो आपके पास एक टोटल बिट का जो साइज़ होता है, जो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा था 64 बिट आ रहा था. तो 64 स्प्लिट होता है 2 ब्लॉक्स के अंदर. एक होता है लेफ़्ट ब्लॉक, एक होता है राइट ब्लॉक. सही है. सो ये 64 टूटा 2 हिस्सों में, एक लेफ़्ट ब्लॉक में, एक राइट ब्लॉक पे. अब जो राइट ब्लॉक का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो एक फंक्शन में जाता है. इस फंक्शन को हम बोलते हैं फीस्टल फंक्शन या फीस्टल राउंड फंक्शन भी कहते हैं, या इसको सब्स्टिट्यूशन भी कह रहे होते हैं. ठीक है. ये फिर आपके पास क्या होता है, इसी के अंदर, इसी जो मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था वो इसी में आती है. एंड देन वो सब्स्टिट्यूशन फिर उसके अंदर आपके पास क्या होती है, परम्यूटेशन होती है, एंड देन इट गोज़ टू द ज़ॉर थिंगी. ठीक है. सो लेट्स टेक अ लुक एज टू what is actually going on inside this feastal function. So इस feastal function के अंदर सबसे पहले एज यू कैन सी कि यहाँ पे की अंदर जा रही है, और ये जो राइट वाला पार्ट है Rn-1 है, ये 2 पार्ट्स चार होंगे. सो ये चीज़ समझो, ये वाला डेटा यहाँ पर आ रहा है. इसके अंदर ये जो डेटा होगा ये 32 बिट्स का है एज वी डिस्कस. ये एक एक्सपेंशन बी बॉक्स करता है. कि एक्सपेंशन बी बॉक्स बेसिकली क्या करता है, वो आपके डेटा को फैलाता है. सही है. सो इसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट होता ये है, इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊँ, सो इसका जो डायग्राम है एज यू कैन सी ओवर हियर, so this was the thing which I have made over there. So you can see कि एक बिट ऐसे आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 4 बिट्स कॉपी हो रहे हैं, एंड जो उसका लास्ट बिट है वो इसका फर्स्ट बिट बन रहा है. सो एक कुछ ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर यू विल फाइंड दैट देयर आर 5 फील्ड्स एज शोन ओवर हियर. सो 5 फील्ड्स सिंस यहाँ पर हैं तो यहाँ पे भी हैं, और जैसे हमने बोला कि जो 4th होगा वो फर्स्ट बनेगा नेक्स्ट वाले का, तो 4th जो होगा वो बनेगा नेक्स्ट फर्स्ट वाले का. सो यू कैन सी दिस. सो 4 to 4, 8 to 8, एंड देन 12 to 12. एंड देन यहाँ पे अगर गौर से देखो तो एक तो ये चीज़ हो रही है, एंड एक और चीज़ हो रही है यहाँ पर, वो ये है कि जो लास्ट वाली जो चीज़ है, सॉरी ये वाली जो है, इसका जो फर्स्ट वाला, जो सेकंड वाले का जो
फर्स्ट होगा, जो ये वाला हिस्सा होगा, दैट विल बिकम इसका लास्ट पार्ट. सो व्हाट ये इस तरीके से शो होता है यहाँ पर कि जो इसका लास्ट वाला होगा ना वो यहाँ पर आ रहा होगा, एंड देन सिमिलरली लाइक दिस. सो जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये वाला, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और ये जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है दैट्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो दैट इज़ व्हाट द P block is doing. It's basically expanding it because हमारी की जो है वो 48 बिट की है. हमने इस पर जोर लगाया, फिर हमारे पास X बॉक्स आया. ये X बॉक्स जो है ये सब्सिट्यूशन है, और ये जो P बॉक्स है दिस इज़ द परमिटेशन. तो ये S बॉक्स क्या कर रहा है, एज इट्स नेम स्टेट सब्सिट्यूशन कर रहा है. बट यहाँ पे सबसे दिस इज़ वेयर द रियल मिक्सिंग अकर्स, एंड दिस इज़ द पार्ट वेयर द कन्फ्यूजन पार्ट इज़ एक्चुअली कमिंग. सो इसके अंदर हमारे पास अगेन एक IC होती है जिसके अंदर 6 इनपुट्स होते हैं, 4 आउटपुट होते हैं. अब जो फर्स्ट एंड जो सिक्स्थ वाली जो इनपुट पिन होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रो, एंड द पिन्स विच आर बिटवीन 2 to 5 आर रिप्रेजेंटिंग द कॉलम्स. So I won't be going into that much detail, but you can figure that out on your own as well. So then this comes, ये भी फिर आपके पास जो था 48 बिट का जो था ये वापसी अब रिटर्न हो रहा है 32 बिट पर, ठीक है. और फिर ये गुजरता है स्ट्रेट P बॉक्स में, एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू आवर पार्ट ओवर हियर. सो यहाँ से अब ये डेटा आ गया, इस पे हमने जोर लगाया because this is again 32 bit and that's also 32 bit, and then हमने क्या किया, इन दोनों को swap कर दिया. तो जैसे हमने उसको swap किया तो अब left वाली चीज़ right बन गई, and then that is the whole procedure. So let me just revise this very quickly. आपके पास 64 bit की plain text आया, उस पर आपने initial permutation लगाई, एंड देन आपने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया दो ब्लॉक्स में, 32 बिट 32 बिट. अब जो आपके पास की आ रही होगी वो 48 बिट की आ रही होगी, विच इज़ गोइंग टू फर्स्ट गो इनटू द मिक्सर वाला ब्लॉक, या इसको आप फीस्टल, ये पूरा जो पार्ट है विद द सॉर्ट थिंग इसको ऑल द मिक्सर, एंड ये जो फंक्शन है इसको फीस्टल फंक्शन भी कहते हैं. सो ये की आए और जो राइट पार्ट था वो आया इसके अंदर. सबसे पहले क्या होगी, एक्सपेंशन P बॉक्स. तो 32 बिट को ये एक्सपैंड करेगा 48 बिट के साथ ताकि की के साथ लग सके. फिर उस पर वो अप्लाई करेगा S बॉक्स, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रही होगी, तो वो 48 बिट को वापसी कन्वर्ट कर देगा 32 बिट में, एंड देन 32 बिट को फिर हम क्या करेंगे, उसको गुजारेंगे एक सिंपल स्ट्रेट P बॉक्स, एक सिंपल स्ट्रेट परमिटेशन से. जैसे ही वो हो जाएगा तो वो वापसी 32 मतलब 32 बिट में था, वो हम ले लेंगे उसका जोर लेफ़्ट वाले पार्ट के साथ, एंड देन यू आर गोइंग टू स्वैप both of these, and then you're going to get your first round completed. Now each of these round is called a feastal cipher, ठीक है. Now what happens कि आपके पास जो इनपुट जो आ रहा था वो 64 बिट का ब्लॉक नहीं आ रहा था, बट 120 बिट का ब्लॉक आ रहा था. तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 64 and 56 में, because that's how it's going to be split. एंड जो आपका जो बाकी का जो हिस्सा होगा वो आपका ज़ीरो पैडिंग से कंप्लीट हो जाएगा. आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी इन 60-60, नॉट इन 64 एंड दैट, बट सिंस ये आपका 64 बिट एक्सेप्ट कर होता है DES एल्गोरिथम, सो हम इसको स्प्लिट करेंगे 64 से, एंड देन जो बाकी का हिस्सा है दैट्स गोइंग टू बी 56, एंड देन ज़ीरोज़ टिल यू गेट 64. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 64. Okay, now let's talk about the last part, which is going to be this round key generation, और ये चीज़ क्या कर रही है. So यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ हो रही है आपकी. एक होती है इनिशियली आपकी जो की का जो साइज़ होता है ये 56 नहीं होता है, ये 64 ही होता है. तो होता है ये सीन है कि जो 64 में से जो 8 बिट्स हैं, ठीक है, दैट इज़ आर दोज 8 बिट्स आर योर पैरिटी बिट्स. जब आप उन 8 बिट्स को हटा देते हो देन यू गेट दैट 56 वाली बिट की. सो आपके पास वो 56 की बिट की आ गई, आपने अगेन उसको स्प्लिट किया, एक शिफ्ट लेफ़्ट में एक शिफ्ट राइट पे. अब शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट राइट का मतलब ये होता है कि 28 बिट की 28 बिट यहाँ पर आ गए. अगर आपके पास राउंड 1 to 9 या 16 चल रहे हैं तो उनको आप सर्कुलर शिफ्ट 1 करेंगे. सो व्हाट अ सर्कुलर शिफ्ट मीन्स इज़ दैट इफ़ यू हैव like a 28 bit, something like 000 dot to 1. So imagine that this is about 28 bit size, and if I want to apply a bit
like a circular shift, right? Sorry, a circular shift on this, then, or I think so ये left की तरफ लग रहा है, so this is going to be less like this. So इस पे जब shift left लगेगा, this is then going to be 0 0 0 dot 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 1 0. And if you want to do it on the right, so this is going to be 1 0 0 dot 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 to 0, something like that. So this is if you have done it on the right, and if you have done this on the left. Okay, so यहाँ पर फिर आपके पास ये यूं कंटिन्यू होता है, और हम इसके अंदर एक वो डाल होते हैं कंप्रेशन पी बॉक्स में, हम ये चीज़ डाल होते हैं 28 बिट, और ये 28 बिट फिर कंप्रेस होता है, एंड देन दिस गिव्स आउट योर 48 बिट की for each of the round, and this the process repeats till you get 16 keys. So that was all.